Does this require your extra attention? So the relativity between the normal size of transactions and that particular size of transaction is big wide gap. So it should catch your attention. Tally helps you to find out that particular set of transactions. कि इसका 8,000 का ट्रांजेक्शन था, उसके सामने 2,40,000 का हुआ है सेकेंड ट्रांजेक्शन. There is a big difference. इसके difference is around 28 times. So ये लेजर में हाँ वो पहले एक सैंपल मंगाया था, फिर फाइनल बड़ा मार्क, हाँ ठीक ओके, तो दोनों वाउचर पास्ट. नहीं, चेक करो डिटेल्स निकालो. A particular party cannot have a big variation. That's a normal trend. एक particular type of ledger or one particular type of party or customer or supplier would not have a major difference in the supply patterns. If there is, it should highlight it. Tally helps you to identify them. So this is the relative to the lowest value transaction. Enter करो. See, RSF ऊपर कैलकुलेट हुआ है 25,000 और 1 लाख 25 times. 1,000 वहाँ पे. So highest value transaction and the lowest value transaction in that particular ledger. It compares them and says, sorry, the next highest value transaction, not the lowest, sorry. The highest and the next highest. ये दो के बीच का कंपैरिजन करके आपको देता है. So highest और next highest के बीच में अगर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, it highlights it. Now this is really very important or useful tip to identify dummy transactions or a misuse of a particular ledger or account, because most of the time dormant accounts and all that में ये नजर पे आता है. बैंक्स में ये खास यूज किया जाता है कि उसके ट्रांजैक्शन पूरे साल में कुछ ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहे, सिर्फ इंटरेस्ट हो रहा है और अचानक एक ट्रांजैक्शन 10 लाख का हो रहा है. So then that ledger or that bank account needs to be audited thoroughly. So same way here, in your cases or your customers' cases, such ledgers needs to be audited or checked thoroughly. Other analysis. Now this is something which would again be of interest to most of you who are doing not only statutory audit but also internal audit. क्योंकि अभी तक जितने देखे दोनों में काम आ सकते हैं, इंटरनल ऑडिट के भी आपको काम आ सकता है और स्टैट्यूटरी में ये भी उसी तरह से है. इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस जो हुए हैं उसका समरी एक साथ मिल जाता है, टाइप ऑफ कॉन्ट्रा एंट्रीज. अब वो तो कॉन्ट्रा वाउचर टाइप में मिल जाता है, फिर इधर लाने का क्या जरूरत था. So there are people or there are companies who allow banks in payment transactions or in journal entries also. They pass a contra in journals. और वो आपके नॉर्मल चेक से स्किप हो जाते हैं. यहाँ पे आपको सारा इंटर बैंक ट्रांजैक्शन सामने आ जाएगा, पकड़ा जाएगा कि अगर स्किप हुआ है वो जर्नल के ऑडिट में स्किप हो गया तो ध्यान में आ जाएगा. Then cash withdrawals or deposits to the bank. टोटल वैल्यूज कितनी है, कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं, एंटर एंड these transactions are visible. So any cash movement to and from the bank. Then fixed asset analysis. Fixed asset details मिलता है टैली में से. फिक्स एसेट रजिस्टर नहीं मिलता है टैली में से. सब लोगों का कंप्लेंट होता है नहीं मिल रहा है, सच में नहीं मिल रहा है. लेकिन उसके लिए रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टैली में से मिल जाए तो हाँ, क्योंकि ट्रांजैक्शन ही है ना अल्टीमेटली, और वो ट्रांजैक्शन इस तरह से ग्रुप करके भी मिल जाते हैं. सो लैंड एंड बिल्डिंग सो हियर ऑल द ट्रांजैक्शंस जिसमें एडिशंस और डिडक्शंस हुए हैं वो पर्टिकुलर लेजर्स में वो सामने आ रहे हैं. जिसमें वो एंट्रीज पास नहीं किए इसलिए वो दिख नहीं रहा है ब्रेकअप्स, but otherwise it will also show the breakups of the transactions that are recorded and updated. These were the exceptions in this particular subset. वहाँ पे options हैं, उससे ही मैं गया. इतने transactions तो आपको minimum देखने पड़ेंगे because there is some movement in this or some abnormal behavior than the normal ones. All transactions are otherwise visible. So this helps us to get the details in a more informative manner. फिर इसमें है ना along with this ये बटन से भी कोई और ऑप्शन से हैं where you are able to even see the transactions within these कि where the transactions were less than 180 days or more than 180 days based on the voucher date.
और वो अकॉर्डिंगली ग्रुपिंग हो रहा है, उसमें कुछ कन्फिग्रेशन और करना बाकी होगा, इसलिए ये डेटा में नहीं दिख रहा है। ईयर गलत चेंज किया, डेट बाद में। सो डेट सिलेक्शन में कुछ रहेगा, तो करंट डेट की जगह ओल्ड डेट सिलेक्ट किया, मतलब करेक्ट, बहुत ज़्यादा ओल्ड या न्यू डेट्स रहेंगे इसलिए। फिर हाईएस्ट एंड लोएस्ट वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस, अगेन दीस आर यूजफुल फ्रॉम एक स्किप हो गया, ट्रांजैक्शंस ऑन हॉलिडेज विल टेक दैट। हाईएस्ट एंड लोएस्ट वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस, सो इन एनी पर्टिकुलर लेजर व्हाट वर द टोटल maximum value transaction and the lowest value transaction, so that you are able to identify the difference, and the difference is also shown in percentage. So variations आप देख के उसमें और डिटेल चेक करना है तो जा सकते हो percent. So you are able to see the transactions, and ये जो ऑडिट में फीचर एक दिख रहा है, ऑडिट स्टेटस, ऑल्टर्ड एंड ऑडिट इन्फो, इसके बेस पे अगर वो ट्रांजैक्शन ऑल्टर हुआ है तो you are having a reason to believe कि there is some more need to check. If it is a regular transaction, probably you may skip it. But if it is getting altered, मतलब कुछ तो चेक करने की जरूरत है. So if the transaction value is exorbitantly high or low, and there is an alteration done, you may check. Because in normal scenario, business में लोग घड़ी-घड़ी alter नहीं करते transactions. Transactions on holidays. This is again useful. Here, Tally provides you the facility to define holidays within it. And this is something which for me also was a surprise. When I saw this report, मैं बोला ठीक है, holidays के पता कैसे चलेगा Tally को कि holiday कौन सा दिन है मेरा holiday अगर Thursdays है तो Fridays है तो मैं इंडस्ट्रियल बेल्ट में हूँ कोई और वहाँ पे हर Friday को छुट्टी है तो कैसे पता चलेगा? So 15th August को तो ठीक है standard holidays है, but उसके सिवाय क्या? तो Tally allows me to define the holidays. Not only the holidays but also abnormal holidays like strikes है तो उस दिन का भी मैं मेंशन करके रख सकता हूँ ये दिन स्ट्राइक था इसलिए काम नहीं हुआ था, और फिर ये रिपोर्ट जब मैं खोलता हूँ वो वाउचर डेट के जितने भी ट्रांजैक्शन है सब निकाल के देता है. That means that transactions are for sure having some extra attention required from your side. So you define the holiday list and then simply go and check what were the transactions on that holidays. Define. These are the Sundays and a weekly offer. So it has been defined there. So all these transactions that were on Sundays. So you can then trail back whether these transactions are genuine or not genuine, were permitted or not permitted. So a particular Sunday might be a working Sunday compared to all other Sundays because there was a festival falling on other day and they had set it off it. So you may permit their transactions. Okay, they are valid and allowed. But others you may hold on. Then defining here which weekly off I want to check. So I may have a weekly off which is Friday plus one more day. So weekends in MNCs would be Saturday, Sunday. So I would say 2 week offs, Friday and Saturday or Saturday and Sunday, and any transaction falling on Friday and Saturday or Saturday and Sunday should be highlighted. So it would highlight. Plus, code that. Plus a particular date I want to define, 1st April. I want to define this as a strike or a special day. Then 1st May, Labor Day. And accordingly, so I would be able to define this calendar, picking up the calendar from the client itself. And get this one. Makes sense? Makes value? पेंडिंग एडवांसेस सेम, एलोकेशन किया है, एडवांस दिया है, बिल नहीं आया है, ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, सो इट विल शो यू रिवर्सल्स. स्टेल चेक्स, अगेन चेक्स इशूड क्रॉस 3 months, दे आर स्टेल. रिकंसिलिएशन में चल रहा है, हमारा रिकंसिलिएशन हो रहा है, मैच हो रहा है. आर दे परमिसिबल? नो. So they should come up as a separate value to you or separate information to you. This many checks are already off. They are not going to come into the bank. So some action has to be done on them. What action? Let the management decide. But some action is required. Could be highlighted. You would be able to get that stale checks from here. Again, stale check definition can be defined by you at your own convenience. Because you may be having a client in UAE.
the statement period over there may not be 3 months, it may be 6 months. You may have a client in Nigeria where it may be 8 months for 98 days. You have to have a definition being allowed here. So that definition also you can define here. 3, enter. Whether you want it days, months, so you can say 3 days till when, 8 days, and so on. External confirmations we just discussed, whether this were sent for confirmation, if yes, what is the confirmed balance received from them, and remarks of yours. If there was a difference, the difference and the remarks. And account reconciliation. This is again a very beautiful feature which Tally has brought in recently. वहाँ से स्टेटमेंट आ गया, हमने कंफर्मेशन भेजा, उन्होंने अपना कंफर्मेशन स्टेटमेंट भेज दिया सामने, दोनों में डिफरेंस है. अब वो डिफरेंस चेक करने का जिम्मेदारी किसका है? हमारा है, क्योंकि हमें चेक करना है कि ये गलत किधर है. When I say हमारा है, I don't mean कि ऑडिटर के एंगल से हमारा है, बट आइदर अकाउंटेंट के एंगल से उस कंपनी का टीम को हैंडल करके हमें हेल्प करके सॉल्व करना है, या हमें ऑडिट के वक्त साइन करने से पहले वो क्लियर कर लेना है कि गलत किधर है. सो यहाँ पे कोई भी एक ट्रांजेक्शन में मैं जाता हूँ. सो रिकंसिलिएशन, ठीक है, सो सेम लाइक बैंक रिको हम करते हैं. बैंक रिको में फाइल ले लेते हैं उनका और हम लोग उसके सामने डेट्स डाल देते हैं. उस तरह से यहाँ पे हर ट्रांजैक्शन के सामने हम डेट्स डाल देंगे. ये मैच हो गया. हमारे बुक्स में 17 तारीख है, उनके बुक्स में 22 तारीख को एंट्री है. हमारे बुक्स में 27 तारीख को एंट्री है, उनके बुक्स में 25 तारीख को एंट्री है. मैं कर दूंगा, फिर मैं स्टेटमेंट लेता हूँ तो अपने आप डिफरेंसेस सामने आ जाते हैं. बिकॉज इट इज नथिंग बट सिमिलर टू बैंक रिकंसिलिएशन. There would be transactions which would be there in their books and in our books, but dates would be different. Hence, it is difficult to trail. We can trail them. And then different transactions. You can take a call based on whether they were on the last day of the financial year and hence they are carried forward and hence the dates are different in both the books. Then permissible or not permissible based on the accounting practice followed by the client. Right? Yeah. Up 6 or 3. So then verification of vouchers is the next subset where we discussed if we can do sampling of the vouchers, which vouchers I want to check. So मैं अभी जा रहा हूँ, say for example purchase में enter किया. So I am able to see all the transactions during the year. I would go in a particular month and I would say इसमें 10 लाख का ट्रांजैक्शन I want to audit. This your senior team member would do. फिर उसको सिलेक्शन में नेक्स्ट, फिर वो 374 का भी देखना है एंड सेव. सॉरी सेट मैन्युअली गो द ऑल टेस्ट. So यहाँ पे I can set them for manual verification. Dates take second July. So ये एजुकेशनल कॉपी इसलिए वापस वो डेट्स का जो चले जाता है उसकी वजह से नहीं देते हैं. So you select that particular set of transaction and say set manual verification on. So it will do a manual verification, means it will highlight you कि this many vouchers you have shortlisted. Escape. हाँ, ये manually sampled अपने को दिख रहा है. Escape कर दे. वहाँ पे कितने sampled है vouchers? Total 4 vouchers sampled है. उसमें से 3 verify हो गए, एक अभी तक pending है. So this helps you to keep track of what vouchers you have assigned for verification and whether they have completed or not. While doing the verification, enter कर. उसका verification कर. I can define, give a note as an auditor, whether I am keeping it on hold, I am auditing it, I am waiting for external clarification, or some other internal observations. Select one of them, press enter, and give the note there. Now, once I have done this, I have a choice whether I want to copy the audit details to the audit working paper or no. So I don't want my audit working paper file to become bulky just for the sake of हर छोटा vouching edit मैं उधर जाने देता हूँ. Selected voucher ही उधर भेजना है.
जो जनरिक नॉर्मल कमेंट्स है, पता है कल सुबह ये बता देंगे इसका क्लैरिफिकेशन, वो मुझे ऑडिट वर्किंग पेपर में भेजना नहीं है आज, तो मैं इसको नो करके रख देता हूँ। और अगर ऑडिट वर्किंग पेपर के फाइल में मुझे जमा करना है तो इधर यस करूँगा और सेव करूँगा, तो इट विल गेट sorted or settled in the audit working file. So whenever my senior comes, he just checks the audit working papers. He would be able to see all the clarifications or the details that were there being done during the process of audit at a single source. Yes, and same. Yes. Audited, it is audited now. Yes. So now all vouchers are verified. This is one way of where I am selecting manually vouchers and saying कि ये इतने vouchers का checking कर लेना. So a senior or a person who has done the previous audit of the similar client would select this type of transactions I want to verify. Now second is a generic audit. Say for example sales में जा रहा हूँ मैं. Enter. Enter. और यहाँ पे मुझे एक डिसीजन लेना है कि सबको है ना मुझे based on value करना है कि any voucher above 5,000 or any voucher above 10,000 I want to put into audit. So I can define that auditing definition here at the start itself. The sampling method. So I would say based on amount range, what method I want to apply for this whole set. So Tally will select the vouchers to be audited. Here I had selected in the first case based on my judgment. Now I am allowing Tally to select based on its judgment. It is just asking me the rule on which you want the selection to be done. So I am selecting amount range. So minimum amount range, say for example 5,000. And maximum amount rate 75,000. So all vouchers between 5,000 and 75,000 would be marked by Tally for audit. Where range थोड़ा बता देना. And again date range is some of that. So here they would be marked for a sampling for audit. So your team can just take the sample voucher का list, give it to the client. कितने पेपर्स या इतने फिजिकल वाउचर्स मुझे लाके दे दीजिए, हम लोग चेक करेंगे और कर देंगे. The way we do in our normal scenario. Out of the register we say we ask for that 25 vouchers to be verified, ask the full trail of that 25 transactions to be brought by them and we verify. So same you can do from here. So while I am doing this, enter. Sorry, selection of the mode for some other voucher. Here, I can have the selection based on for all vouchers, odd number vouchers, even number vouchers, specific period. See, between this particular, I want a vouching to be done for April and July. April, July, full audit. So, accordingly, I can define here or escape back, come back. This is a different voucher type, so only 4 option है. जैसे मैं purchase sale में जा रहा हूँ, मैं the value based जाएगा, तो ज़्यादा options आएंगे. So amount based. Based on amount range, based on Benford analysis, based on even number vouchers, odd number vouchers, specific period or specific vouchers. So automatically Tally will take the selection and show you for your audit purpose. Yes. So what is the meaning of Benford analysis? Would require at least a couple of hours because I tried twice, thrice to explain. I was confused at the end. It's more of a method of selecting a sampling based on a range and a formula to be applied. Based on the upper limit and a lower limit, and based on that a formula to be applied. So all the transactions that match a particular set of formulas and the last digit used. उसके बेस पे जैसे इधर सिलेक्शन में जाए Benford नहीं इसमें नहीं आएगा, सेल्स और परचेज में आएगा, कोई पेमेंट में भी select that. So here highest variance positive negative, it takes a digit based mechanism. So it sums up to a single digit, हर नंबर का एक सिंगल डिजिट पकड़ता है और उसके बेस पे वो पॉजिटिव नेगेटिव और उसका इफेक्ट निकाल के उतने वाउचर्स को निकालता है. तो द आइडिया अक्रॉस Benford concept is a person who is doing checking or audit using Benford, he himself also doesn't know what I am going to check. He gets a full surprise box. And same way, the person who is sitting on the other side, he would be able to identify your pattern based on हर एक साल में 10 साल के ऊपर का वाउचर चेक करता है. ये एक चेंज लगा दिया, उसको भी ये अचानक ये कैसे 4 वाउचर मांग लिए जो तो कभी सोचे ही नहीं थे. दूसरा
एक कीबोर्ड टाइपिंग का मेथोडोलॉजी है हम लोगों का, मतलब कोई भी नंबर टाइपिंग का, नंबर राइटिंग का। आप अगर डब्ल्यू वाउचर एक बनाओ, एक सीरीज बनाओ, आप 50 नंबर एक साथ लिखो बिटवीन 100 टू से 5000। आपकी लास्ट डिजिट और सेकंड लास्ट डिजिट की सीरीज में ना कुछ कॉमनैलिटी आएगी, और वो सीरीज को पकड़ के वो आइडेंटिफाई करते हैं इतने प्रोबेबल वाउचर्स है, मतलब द कंसेप्ट आइडेंटिफाइज बेस्ड ऑन दैट प्रोबेबिलिटी, इतने प्रोबेबल वाउचर्स है which may have been done at a same time together, because while your mind thinks, if you are doing it together it goes in a same sequence, if you are doing at different time intervals it thinks in a different time interval sequence. So today if you write, just try and explore that, you will write 50 numbers which would have some common digit repeated like anything, consciously unconsciously, कैसे भी ट्राई करो। So they have identified that methodology और उसके ऊपर पूरा statistical model बनाया है, and that's how it works. But more so for us in a simpler method कि हम लोग एक रेंज ले लेंगे और रेंज के बैकग्राउंड में निकाल सकते हैं। तो maybe first 2 years till we get familiar with the standard audit tools, we may skip that. We may experiment on 1 or 2 voucher types and then we would use it. But there is a algorithm around which it comes up. Then related party transactions. See here, total 23 sets of transactions are there in related party. So 23 transactions in related party, and within that 23 sets of transactions, you are able to see these ledgers over there, and you go into that and accordingly make the summary of your related party reports or details. These transactions you would require extra checking or special checking, so you would do a detailed checking for maybe transfer pricing, for maybe the internal transfers and loans, the interest rates and so on, whether they were applied right or wrong and so on. Then same way forex transactions in case foreign currency is being used by the client. So all the forex transactions are grouped together, given to you in a single sheet. So you are able to trail which and how much you want to verify them. Same MSME transactions. This MSME listing would come based on the definition given in the ledger by the customer or by your team. And salary and wages in case they are using payroll, their transaction sets. Okay. So we'll take a break here, and post break we'll see some of further features here and then some other functionalities and features in there. Okay. Thanks.